कभी ऐसा लगा है तुम किसी को जितना करीब लाना चाहो वो उतना ही दूर भागते हो? And the more you pull away, the louder your nervous system screams, do something, say something, fix it, just don't let them go. It's not drama, Ali. It's your brain in survival mode. जो कि it's basically trying to rewrite an old story of abandonment. Like an emotional tug of war. So basically आज हम बात करना चाह रहे हैं about the anxious avoidant attachment syndrome or trap, right? Yeah. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Ab Next क्या, जहाँ हम बात करते हैं उन messy emotions की जो हर smart, ambitious, intelligent इंसान के दिल और दिमाग में ना this is screaming out loud. और आज की जो episode है it's going to hit deep because it's about love, fear and the programming that we didn't choose but we end up repeating. Right. तो हम वो सारा इमोशनल ड्रामा डिकोड करना सीखेंगे जिससे आपका वो रिलेशनशिप पैटर्न के पीछे जो चल रहा है, राइट? एब्सोल्युटली. एंड ये पैटर्न लोगों का दिन तोड़ता है, उनकी दिमाग की दही बनाता है, राइट? एंड सो आई एम अली बाला गहवाला And I'm Maryam Ahmed. and today we're going to talk about the anxious avoidant trap. Yes, stay tuned and watch till the end because you're going to learn a lot about this style of attachments. अच्छा अली, मुझे ना एक बात याद आई अपनी क्लाइंट की जो कि मुझसे अक्सर ये कहती थी when she started therapy, so she used to complain about this कि he says he loves me a lot but he never calls unless I do first. And whenever she used to call him, he used to be annoyed, like, why are you so greedy? Why are you so needy? And the thing is that she didn't realize that she wasn't needy or greedy, but she was activated. और उसका जो नर्वस सिस्टम था ना वो ये स्क्रीम कर रहा था कि भाई कनेक्शन मीन्स सेफ्टी, और जो बंदा था उसका जो है नर्वस सिस्टम स्क्रीम कर रहा था कि भाई क्लोजनेस मीन्स डेंजर. ठीक है, तो दोनों के ऑपोजिट स्टाइल्स हैं. सो दैट्स द इमोशनल मिसमैच जो कि मोस्ट ऑफ अस वी एक्सपीरियंस एंड वी गो थ्रू थिंकिंग इट इज लव व्हेन इट्स एक्चुअली फियर प्लेइंग ड्रेस अप. राइट. सो वो चेस करती थी, ये वो पीछे भागता था, बिल्कुल. और एक दूसरे को प्रॉब्लम समझा जा रहा था. Exactly. That's exactly what it is. राइट. तो देखिए, एक बंदा जैसे पानी में डूब रहा हो और दूसरा जो है ना वो लाइफ जैकेट से डर रहा हो, राइट? तो फर्स्ट पार्टनर है ड्राउनिंग एंड इज लाइक यू नो लव मी, रीअश्योर मी, मुझे तुम्हारा यू नो कनेक्शन चाहिए. Yeah. एंड द अवॉइडेड वन इज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेला स्विम करने दो, डोंट टच मी, यू नो यू विल टेक मी डाउन विथ यू. सो इट्स दैट काइंड ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर. They're both fighting to basically feel safe, but in the opposite directions. Literally in the opposite directions. One clings to avoid pain and the other runs to avoid overwhelm. Right, and that's why it hurts like anything. Oh yes, it does. And we're going to get right to that. अच्छा, अब हम बात करते हैं जब कुछ रियलिटी बाइट्स की. ठीक है, कुछ मिथ्स, फेवरेट सेगमेंट. मिथ्स से जिसको हम बस्ट करेंगे, और वैसे तो गूगल ने सबको आधा साइकोलॉजिस्ट तो बना ही लिया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ते भी ऑनलाइन और समझ भी जाते हैं, और जो नहीं है वो बाकी ये ऐसे कर. Exactly. So half-healed people create full chaos. Remember that. So that's why we're covering these topics that you get to learn. Okay, so myth. If we love each other, it should be easy. No, really, cause ऐसा नहीं हो सकता, right? आपका attachment style does not care about your feeling. It only cares about the safety programming you've had from your childhood. That's very true. आपका इश्क सब उसके सामने ना खत्म हो जाता है. बिल्कुल. Love is not just hearts and violence. ये कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही है भाई. This is reality. और
ये है असल में क्या है, ये आपका इमोशनल ब्लूप्रिंट है, ठीक है. अगर it once love meant inconsistency and anxiety, तो आपकी जो brain है is going to chase that chaos because that's what it's familiar. And so not realizing that it's not healthy or not, but it would chase the same familiar chaos. That's why healing often initially sounds and feels boring. But peace feels, and peace feels unsafe when all you've ever known is turbulence in life. I said, I've not had to go through that, alhamdulillah. Alhamdulillah. Right? But I've had that with clients where I remember this one client, she's like, I message him, and then वो 2 हफ्ते तक जवाब नहीं देगा. Excuse किया है कि I'm in the armed forces, so I can't access my वो. But then she's like, I see him on Instagram, like online का status आ रहा होता है, right? Last seen and things like that. तो फिर ये क्यों होता है, right? And the funny thing is that this is a person who knows the psychology behind it also. But when you're inside that loop, Yeah. then you don't understand it at all. Trust me, I understand that. Been there, done that, which is why this is, again, a very personal topic. And I've already warned Ali. I'm probably going to say a lot because this is very personal and I have a lot to share. So let's get to another myth. Ali, लोग अक्सर avoidance के बारे में कहते हैं कि the avoidance, they just do not care. The truth is actually quite the opposite. They care too much that their brain feels जितनी भी ये फीलिंग्स जो वो प्रोसेस करते हैं, फील करते हैं ना, वो फायर अलार्म की तरह बजती है उनके दिमाग में. और ये जो है ना, ये उन्होंने बचपन में ही सीखा होता है कि ये जो इनकी बीइंग इमोशनल मीन्स दैट यू आर rejected, you're going to feel shame, you're going to be embarrassed. तो वो इसको प्रोसेस इस तरह करते हैं, which is why they numb, detach and completely ghost you at times, which most of you are probably experienced, and they label it as strength. But it's actually such protection. Right. So in a way, they shut down in order to prevent their heart from betraying them. Yeah, it's a disguise. Right. Okay. So next myth is sometimes closeness doesn't feel safe. It feels like a trap. Exactly. देखिए, अवॉइडेंट और एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में एक चीज समझने की ये है कि जब when your body associates love with loss, so even a section feels like an alarm to an avoidant. So you lean out, and even when your heart is saying, "Hey, you should stay," you lean out. It's not confusion. It's actually not confusion at all. It's a conditional reflex. So your brain is choosing safety over connection, and at times over and over again. So how would one lean out? So they completely, it's like, whatever I'm feeling, whatever I'm going through, whatever it is that's happening, जो भी चल रहा है दिमाग में समझ में आ रही है, मुझे पता भी है जे अगले बंदे को मुझसे क्या चाहिए. I'm just going to completely snap out of it. I'm going to walk out of this, block everything, because right now this feels like danger. This feels like a threat. So I'm not going to respond to any of this. I'm not going to cater to any of this. This is a threat. I need to protect myself. That's Just, yeah. I'm sure a lot of women are going to relate to this. You you've not experienced it, but for women and for men, both. It's not just men who ghost, and it's not just men who are avoidance. Women are avoidance too. It gets interesting. You'll see. Yes, I've had the experience through my couple clients. Yeah. Of both the genders being that way. Yeah. But it's so much easier for men to be avoidant because they're avoidant by nature anyways, because मर्द को दर्द नहीं होता है तो वो वैसे ही अपना है ना अपने आप को थोड़ा सा vulnerability से and Weakness. अपने आप को दूर रखता है. Yeah, weakness से show नहीं करनी ना हमें. पता चल गया तो क्या होगा? I'm a macho guy. I can't show this side. अच्छा अली, कभी कभी जो है love feels like work when you're anxious. It's hard work. ठीक है. और anxious attachment जो है ना वो basically it turns love into a performance. So you start believing that affection has to be earned. And this is for
I'm sure men can relate and women can understand how their men behave and why they behave the way they do. This is one of the reasons why they think that love has to be earned, affection has to be earned. So they do that through fixing things, sometimes pleasing people, sometimes providing, sometimes by just proving themselves. Or it's like, you know, आप ऐसा this is आप एक emotional probation में रह रहे जहाँ पे you're waiting for the next reassurance hit. So if I'm a man and I know that I've screwed up, I've done something, but I don't want to accept and acknowledge and hold the accountability, so I'm going to take you out for shopping because I need to prove, something. I need to provide and I need to please in order to show affection and that it has to be earned. And also, if whatever the issues are between a man and a woman, this is the easiest way for an avoidant to actually not be held accountable for anything just by doing something. So at the end, you need to realize that this is not really love. It's not. It's your nervous system fatigue disguised as devotion, Ali. It's जब चीज़ें अनस्टेबल होना शुरू हो जाती हैं, वो जो जॉब आपका है उससे it becomes unstable, तो फिर आप ओवर टाइम ओवरवर्क कर रहे होते हैं अपने आप को, and then as anything that goes into overdrive, burnout happens. In this case, it's emotional burnout. Absolutely. Right? Absolutely. And then things just fall apart. बिल्कुल ऐसा ही है. और बात ये है ना कि हमारी जो देसी खानदान है, साउथ एशियंस, we were taught कि कुछ शर्म रखो, sacrifice करो, चुप रहो, right? This plays a lot into this whole dynamic also. बप फटने वाला. यहाँ का. Okay. I don't want to scare anybody on YouTube. कुछ नहीं होने वाला. ऐसा सब खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह. मसला ये है कि जो अली ने कहा ना, ये बात बिल्कुल 100% accurate. और होता ये है कि जब ये वाली सिचुएशन होती है तो जो avoidance है, they learn that silence is strength, which is the ghosting period that you experience. और जो anxious इंसान होता है वो ये समझता है कि जी over giving is love. हम एक ऐसे माशरे में पले बड़े हैं जहाँ पे we state emotion suppression as maturity. तो अली ने भी बात की है. But all it really does is, and all it has ever done is that it disconnects us from our authentic selves. Which reminds me, अली मैंने पता नहीं भी कितनी वीडियोस के अंदर ये बात की है और जितनी करूँ मुझे लगता है कि कम पड़ती है. We glorify sacrificing for people. मैंने इसके लिए ये किया, मैंने 10 साल ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे कहा, मैंने चुप रही तो मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने आप को मारा. Why are we glorifying this? This is not love. What are you glorifying exactly here? कि आपने अपने the price that you paid was your self-respect, your self-worth, your value, your love, your desires and everything just to please somebody else. And at the end of the day, you're blaming the other person that, oh, I did this much. और आपको पता है अक्सर क्या होता है? सामने वाला कहता है मैंने तो नहीं मांगा था. Exactly. Right? तो आपका assumption था कि मेरी नीड थी. मैंने तो किसी को नहीं बोला ये करो. Exactly. हम क्यों glorify करते हैं sacrifice को? ये कहाँ लिखा है कि हमें एक तो sacrifice इस हद तक करनी है और फिर इसको glorify भी करना है? Why? What's the actual thing that you're trying to highlight here? That you were chasing a person who was never available from the start. And you assumed something about this person that he's going to... You fell in love with the potential of what this could be without realizing the actuality. The reality is that this person is not that. So I have an issue with glorifying sacrifices. Right. So I have a question. Yeah. And there's something that has been asked was, why do I always fall for emotionally unavailable people? Because your nervous system chases what's familiar. So अगर love and affection has meant abandonment, or it has what we have experienced in your childhood is abandonment, or is turbulence, or is avoidance, that's what you're familiar with. That's what you're chasing. So if chasing was your love language as a child, then you chase again over and over till the healing begins. Absolutely. You seek help. And when does the healing begin? When you seek help, right? When you become aware that you need help, you reach out, you start working. It could be self-work as well. I mean, it doesn't mean that you reach out to a practitioner. Absolutely. So, go ahead. I have a question, one more question for you. Yes. क्या ये opposites कभी काम करते हैं? They can.
ये डायनामिक काम कर सकती है, लेकिन इसकी दोनों लोगों का मेच्योर होना और ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द रीज़न आई से दिस इज़ बिकॉज अवॉइडेड तो क्या कम्युनिकेट नहीं करता बिल्कुल भी, और एंशियस जो है वो कम्युनिकेशन की खातर उसके पीछे पता नहीं कहाँ तक भाग जाता है. आई थिंक जितना हमने ये सुना कि तालियों की खातर आप चीन तक चले गए, विच इज़ अगेन अ वेरी आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी बिहाइंड दैट स्टेटमेंट, बट अगर इन खवातीन का और मर्द हज़रात का बस चले तो ये किसी के पीछे चीन क्या टिम्बकटू पता नहीं कहाँ पहुँच जाए जस्ट टू हैव दिस कम्युनिकेशन एंड दिस रिलेशनशिप. But the thing is that you both need to decide that you need to stop outsourcing healing. It has to be done within. It has to start from you. And it can happen when you're able to say that, yes, I am triggered, but I am safe. When you can say things like, that this connection is not a battlefield, but it is a conversation where you're ready to understand the dynamics of how you are different and how the other person is different, and it's for both of you to understand. That's where you can make a connection work, irrespective of how opposite or similar it is. That's when the love shifts from reactive to being responsive. और रिस्पॉन्सिव में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ऊपर फोकस करें rather than the other person. It's your saying कि वो ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, right? You start with मैं ठीक हूँ, right? मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही है, right? And then the other person की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो. It's not your responsibility to heal the other person. बिल्कुल. अच्छा अली, इससे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे एक चीज़ याद है, यानी गेट दिस इज पर्सन. I was talking to somebody a long time ago, और मौजू ये आया कि but I thought you don't like this and you don't like that, so before even asking me a question the other person already had all the answers. और ये जब डिस्कशन हुआ, ये बात हुई, तो मैंने कहा यार hold on a second, how did you gather this information? How did you get to this conclusion कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, I don't like this or I won't like this? Because I kind of know you. मैंने कहा okay, so let's set a rule. The questions that you have for me, ask them and let me decide my part of the story rather than you coming out with the answers, because my answer could be very different from yours. So अगले बंदे के हिस्से का काम आप खुद करके अपनी एफिशिएंसी ना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी आपकी एफिशिएंसी आपको मरवा देती है और काम करने में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. So let the person who's responsible for their part of the story, let them deal with it. You deal with your part of the story, which can change the dynamics of a relationship completely. Right. So taking those practical tips further, Yes. right? Emotional awareness तो हो गई आपकी ना, right? Yeah. उसके बाद next क्या? नेक्स्ट ये चीज़, सबसे पहले तो आप ना पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें और अपने इमोशंस को रेगुलेट करें. अब मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि इसका मतलब क्या. मतलब ये कि जी आप सबसे जब आप पैटर्न्स नोटिस करने लगते हैं तो देन यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक एम आई रीचिंग आउट फॉर कनेक्शन और टू calm panic? Am I distancing for clarity or for control? Because you need to understand the dynamics of avoidant and anxious is a lot of manipulation and a lot of control over the other. So you need to ask yourself these questions. The pause between feeling and reacting, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हीलिंग शुरू होती है. Right. So सेल्फ अवेयरनेस जो है वो पॉज का बटन है, अगर तो रेगुलेशन वो चीज़ है जो आप उस पॉज में करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड बात ये ना कि a lot of times when couples especially are talking, they're talking about you, tum, You did this. you did this, right? We encourage I language, right? Yeah. I statement, right? Instead of saying you never ever care about me, how about saying I feel anxious when you don't text me back? That's a brilliant strategy. Right? Yeah. Because देखिए ट्रस्ट जो है ना वो तब ही बिल्ड हो सकता है जब आप प्रॉब्लम को टैकल करें, राइट? बिल्कुल. पर्सन को नहीं. Absolutely, बहुत जरूरी है. Focus on the problem, not the person who caused it or created it, but focus on the problem because you want to solve the problem. You can't change the person or anything about their behavior. So address what is important. अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त गारंटी टिप ये है कि भाई कुछ हुआ है, ज़रा ठहर जाए, रुक जाए, breathe, pause, rub your palms together and feel your feet.
ठीक है, रिमाइंड योर नर्वस सिस्टम, ये आपका वक्त है, बचपन का नहीं है। या कोई भी पुराना वाक्य जो आपको जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर लेकर आता है, दैट यू रेजोनेट विद समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, और वो भी ट्रिगर्स आपके एकदम से एक्टिवेट हो गए। सो रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज नॉट द प्रीवियस इवेंट और द पास्ट इवेंट और समथिंग। Right. So walk out of the past into the present. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मेरी जब दिल का कनेक्शन है ना वो टूट जाता है, तो then we have to remind ourselves कि लोग तो हमसे पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला never does that. एब्सोल्युटली, Right? And he said ना कि भाई when you call out to me, indeed I am near, right? या So call out to Allah subhanahu wa ta'ala at that point, right? When everything and everyone has abandoned you, turn to him and ask him to help you. बल्कि ये तो लिखा है ना कुरान में कि इंडीड माय लॉर्ड इज नियर एंड रिस्पॉन्सिव। Right. So अच्छा अली, जो तुम अभी जो टिप दिया ना, दिस इज अगेन समथिंग वेरी पर्सनल, आई वांट टू शेयर दिस, sorry, but I want to share this so with everybody. सारे लोग आपसे आगे पीछे जो है अलग हो जाएंगे, इस पर कोई शक नहीं है। अल्लाह की ज़ात है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये वो चीज़ है जो मैंने भी रिसेंटली बहुत रिसेंटली एक्सपीरियंस की है, और मुझे यही याद आया, बहुत सारी बातें जो बचपन से सुनते आते हैं ना, हम काफ़ी सुनते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ रिटेल करते हैं, कुछ लेट गो कर देते हैं। उसको से मुझे याद आया कि जी कबूलियत का जो सबसे प्यारा वक्त है वो है तहज्जुद की नमाज। when the Lord is literally right there and he's asking मांगो क्या मांगते हो, and he listens to everything. वैसे तो अल्लाह सारी दुआएं सुनता है, लेकिन ये एक सिर्फ खास वक्त है। So I said, okay, let me try this. Let's see where this takes me. And so I made it a point to pray Fajr, Fajr before Fajr, and give me that 10-15 minutes where I pour my heart out. Ali, the first 4 days, I wept like a child. ठीक है? Again, हमें लोगों से expectations होती हैं, हम लोगों से जोड़ते हैं, हम लोगों से उम्मीद करते हैं, which is होती है, हर रिश्ते में आपको होती है, कोई ना कोई उम्मीद होती है। लेकिन हम जिस ज़ात जो पूरी कायनात को चला रहा है और जो पूरी दुनिया को संभाले बैठे हैं, हम उससे मुखातिब होते हैं ना, ज़रा बड़ा हिचकिचाते भी हैं कभी कभी, और कभी हमें इस नौबत तक आती नहीं कि वी कैन टॉक टू गॉड डायरेक्टली एंड शेयर एवरीथिंग दैट वी आर फीलिंग। अल्लाह को तो सब पता है ना, एक ये भी उसके बावजूद अल्लाह कहता है मुझसे मांगो। सो अल्लाह लाइक्स व्हेन यू आस्क हिम फॉर व्हाटएवर इट इज। But I took those 50-20 minutes and I cried and I poured my heart out. 4 दिन जो है ना, I kept crying. 5 दिन, and why am I not crying? मतलब उस तरह से आंसू नहीं आ रहे जैसे 4 दिन बच्चा बिलक के रोता है, उस तरह से नहीं हुआ तक के आंसू, but it was very different. There was a sudden sense of peace and calm, which पैरों तले जिसने मेरी ज़मीन ये हिलाई कि अल्लाह मियाँ, I was expecting this is going to take longer for me to heal and to process this. That's interesting. और अल्लाह से मैंने वो मांगा जो मैं मांगते हुए खुद ही, अल्लाह आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, मुझे पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ आपसे, लेकिन आप प्लीज सुन लें और इसमें से जो फिल्टर कर दे, जो सही है जो सही नहीं है उसको फिल्टर कर दें आप। Right. And कभी हम दुआ मांग रहे होते ना, and you start saying something, and then you're like, wait, What? अल्लाह मुझे नहीं पता मैं क्या मांगने वाला था, but you know what it was and you get it, right? यही किया, Do it, please. यही किया। So this point is so accurate and spot on. It really, not only does it heal you, but it really redirects you towards the path, the right path. So try this. Ali, this really worked for me. I just wanted to share that with everybody. Right. This is very impactful and powerful. So, how about this? Let's make this part of our Up Next challenge, right? Brilliant. So, hashtag Up Next challenge. Yeah. Take whatever you are looking to work on, right? Because देखिए, कोई भी इमोशनल अवेयरनेस से पहले आपने मांगना है ना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ask Allah for help. Absolutely. So take the time of tahajjud preferably, right? Agar it's not a easy time to wake up, right? Yeah. Take any time of the day where you can take yourself away from your day-to-day hustle and bustle. Yeah. Right? अपने वक्त को निकाल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, right? For example, Friday afternoon, evenings are considered like after asr का टाइम बहुत अच्छा होता है. Wednesdays after ज़ोहर का एक हदीस में आता है टाइम. तो इस तरह के moments, and just pour your heart out. Please do. Right? You'll be amazed. And once you do it,
If you're feeling brave enough, Yes. share it with us, Please do. right? We're your support circle. Yeah. I mean, share it with us. You trust us. And, if not, share it at least with someone you close to, Yeah. right? Yeah. And hashtag up Up next. next. Up next challenge. Great. All right. तो अली हमने क्या सीखा इस गुफ्तगू से? देखो, प्यार हर वक्त परफेक्ट नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता. right? हो नहीं सकता. So it's about being present in the moment. Even though जब तुम्हारे internal सारी ना instincts and patterns जो ना वो scream कर रहे हैं, नहीं भागो, लड़ो, जो भी cling on, whatever it is, right? So just be in the moment rather than any other moment. Absolutely. और देखिए, healing begins when you stop using love to fix your wounds. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ avoided पे issues हो. आप भी अगर anxious हैं तो you really need to see why you're anxious. Why did you form this attachment style? Because दोनों ही healthy नहीं है. So figure out what wounds you have and don't use love to fix those wounds. Start healing by once choosing self-awareness to free yourself of those wounds. Secondly, you don't need to be less emotional. You're not too much. You're perfect the way you are. The only thing you need to do is you need to be conscious of who you're giving and investing your emotions into. So make wise choices, conscious choices. And at the end of the day, nobody's behavior or anything in this world defines your worth or your value, but you do. It's indeed very true, right? So share, subscribe, like, comment, criticize, whatever, right? Share your experiences. Share your experiences. That's what we're here for, to make conversation, Absolutely. right? और अपने आप को हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करना सीखें, बिल्कुल. राइट? अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ें, राइट? एंड रिमेंबर दैट हीलिंग इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah. ठीक है? आप किसी और के बलबूते पे हील नहीं हो सकते, राइट? ना किसी प्रैक्टिशनर के. And I often say that therapy is not a magic pill. It's not, right? Yeah. It's not. So You need to do your part. you need to do your part. So until then, until the next time, keep asking the question. Yeah.